lesson history, that is new king and kingdom. Yesterday and grand. So now question comes, what are prashati? What are prashati? What are prashati? New king and kingdom. This is the chapter. What are prashati? Now you will read what are prashati. Prashatis are metal plates. Metal plates contain detailed ruler. So, what we see, prashatis are metal plates which contain details about ruler. प्रशति जो है एक मेटल धातु है, मेटल क्या प्लेट है जिसमें राजा के बारे में पूरा लिखा हुआ होता है. Written by Brahman. Written by Brahman. Sanskrit regional language. So, Prashatis were written by Brahman. ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ रहता है. And it is written in Sanskrit and regional language. और ये संस्कृत भाषा में और या रीजनल क्षेत्रीय भाषा, जगह की जो भाषा होती है उसमें लिखा होता है. So, what are Prashatis? Prashatis are metal plates which contain details about the ruler. These Prashatis were written by Brahmins in Sanskrit and regional languages. ये प्रशति जो है ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है ना. तो प्रशति में डिटेल्स डिप्रिसाइटिंग द रूल एंड पर्सनालिटी ऑफ द रूलर. प्रशति में क्या रहता है, रूलर के बारे में, वो कैसे रूल करते थे और उनकी रूलर की पर्सनालिटी कैसी थी, उसके पूरे डिटेल्स लिखे होते हैं. ये पेपर कॉपर प्लेट मेटल्स में लिखा होता है. डिटेल नॉट लिटरली ट्रू. अब देखते हैं कि जो प्रशति में जो डिटेल्स दिया रहता है नॉट लिटरली ट्रू. कोई जरूरी नहीं है कि वो सच लिखा हो, सच हो. राजा के बारे में जो डिटेल्स लिखे हुए होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सच हो. दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ. वो ये बताता है कि रूलर किस प्रकार अपने को दिखाना चाहते थे. एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स. रूलर एज वैलिएंट victorious warriors. So, what rulers want to tell about themselves in Prashati, that they are valiant, victorious and warriors. रूलर्स अपने बारे में ये लिखवाते थे, प्रशति में ये बताते थे कि वे बहुत बड़े योद्धा है, बहुत वीर है, बहुत शक्तिशाली है और वे कितने अच्छे से राज्य कर सकते हैं. लर्न ब्राह्मण कंपोज प्रशति.
learned Brahman compose प्रशति। और क्या देखते हैं, प्रशति जो है किसके द्वारा लिखा गया, लर्न ब्राह्मण, पढ़े लिखे पंडित विद्वान जो होते थे उन्होंने प्रशति लिखा। Being rewarded by grants of king, rewarded by grants of land। राजा जो थे वे प्रशति लिखने वाले को, ब्राह्मणों को, विद्वान को लैंड दिया करते थे। रिवार्ड मतलब उनके पुरस्कार के रूप में उन्हें जमीन देते थे, जमीन का टुकड़ा देते थे, लैंड। recorded copper plate and these grants were recorded on copper plate which were given to those who received the land। और ये जो है ये कॉपर प्लेट में राजाओं का नाम लिखाया जाता था कि किस राजा ने किस ब्राह्मण को ये लैंड गिफ्ट किया। तो कॉपर प्लेट इस प्रकार का देखो प्लेट, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्लेट, ऐसे प्लेट होते थे कॉपर प्लेट जिसमें ये सारे में राजाओं के नाम लिखे जाते थे कि किस राजा ने किस ब्राह्मण को, किसने उनका प्रशस्ति लिखा और किसको उन्होंने लैंड गिफ्ट किया। तो इसमें हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल ऑफ नागभट्टा, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। ये एक एग्जाम्पल है, द अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा। तो नागभट्टा जो थे, अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्टा, नागभट्टा वाज ए प्रतिहारक किंग। नागभट्टा जो थे एक गुजरात परिहारक में प्रतिहार जो थे वहां के किंग थे। द प्रशस्ति इज रिटन इन संस्कृत इन प्रेज ऑफ नागभट्टा। और ये कहाँ पाया गया ये प्रशस्ति, ये संस्कृत में लिखा गया था नागभट्टा के तारीफ में, और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्धि पाए। Sandhava, Sindh, Vidarbha, that is part of Madhya Maharashtra, Kalinga, part of Odisha, fell before him even as he was a prince। ये सारे जो थे सिंध के, आंध्रा के, विदर्भ के, कलिंग के, ये सारे राजा ने लिखा कि वो एक प्रिंस है। He was a prince, वो एक राजा। He won a victory over चक्रयुद्ध, the ruler of कन्नौज। नागभट्टा जो थे उन्होंने चक्रयुद्ध को हराया था युद्ध में, जो कि कन्नौज के रूलर थे। He defeated the king of वांगा, वांगा के किंग, वांगा का है पार्ट ऑफ बंगाल, वहां के किंग को हराया था। अनर्था, अनर्था पार्ट ऑफ गुजरात, अनर्था जो है गुजरात के एक भाग, वहां के किंग को हराया था। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराथा फॉरेस्ट पीपल एंड सुरुकुष्टा, टर्क, वत्सा, मत्स्या, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। वत्सा एंड मत्स्या जो किंगडम थे नॉर्थ इंडिया, ये जितने थे सबको इन्होंने हराया था। किसको किसको, वांगा, अनर्था, किरता, टर्क, वत्सा, मत्स्य। तो इस प्रकार ये सारे जिनकी प्रशंसा थी उनको इसमें लिखा गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, वॉरफेयर फॉर वेल्थ।
warfare for wealth. This was the new topic of today's new topic. Warfare for wealth क्या मतलब क्या है? What do you mean by warfare of wealth? पैसे के लिए लड़ाई करना, युद्ध करना। मैंने क्या था, राजाओं को इस उद्देश्य से लगते थे कि उनके पास उनका राज्य बहुत समृद्ध हो जाए, बहुत धन दौलत हो, वे बहुत डोमिनेंट रूलर हो, तो ऑल दिस रीजन, तो वेल्थ, वारफेयर फॉर वेल्थ, रूलिंग डायनेस्टीज, specific reason, why. तो जितने रूलिंग डायनेस्टीज होते थे, जितने राजा महाराजाओं का जो राज्य होता था, साम्राज्य होता था, उनका एक अपना विशेष एरिया होता था, स्पेसिफिक रीजन, और वो अपने किंगडम में ही उनको रूल करना पड़ता था। Try to control other region. Why? But at the same time, they try to control other region. उनका अपना एक स्पेसिफिक रीजन तो था, लेकिन वे दूसरे एरिया में भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, अपने हस्तक्षेप जमाना चाहते थे, अपने कंट्रोल में उसको लेना चाहते थे और उससे राज करना चाहते थे। तो क्यों? वाई दे वांट टू कंट्रोल अदर रीजन? टू इंक्रीज देयर पावर, टू इंक्रीज देयर पावर। वे अपने पावर कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा राज्य के ऊपर राज्य करेंगे, उसको हस्तक्षेप करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो वे ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो ये था उनका एक मोटो कि टू इंक्रीज देयर पावर, टू एक्वायर more wealth, Now the second is to acquire more wealth, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने। दूसरे राज्य के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा उनको पैसा आएगा, तो वे वेल्थ के लिए, धन दौलत के लिए ये करते थे। टू कैप्चर द रिसोर्सेज, टू कैप्चर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। और नेक्स्ट रीजन वाज टू कैप्चर रिसोर्सेज जितने थे, मतलब अलग अलग जगह में जो भी चीज थी, रिसोर्सेज थे अलग अलग राज्यों में, उसको भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते। I have three such examples for warfare of wealth. Three examples are there. You will see through three examples warfare of wealth. First we will see, number one is this tripartite struggle. First example is स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए युद्ध हुआ और तीन देशों ने भाग लिया, तीन राज्यों ने भाग लिया, इसको ट्राइब का नाम दे रहे हैं।
phosphorus, repeat, in Ganga Valley. So what we say cannot vibrate prosperous and 40 cities Ganga Valley. So every ruling dynasty they try to control the areas for them. सारे ruling dynasty में क्या देखा कि एक अपने एरिया को पेनिट्रेट कंट्रोल करते थे एंड दे डू इट बाय यूज ऑफ आर्मीज के द्वारा करते थे. तो हम एग्जांपल देखेंगे डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. तो कौन सी डायनेस्टी है जो कन्नौज के ऊपर युद्ध किया? इट वाज गुरजारा प्रतिहारा एंड इट वाज it was Guljara Pratihara and Rashtrakuta dynasty and Pala dynasty. ये तीनों का नाम हमने कल तीन पार्टी जुड़े हुए थे इन्वॉल्व थे. That is why it is known as tripartite. इसे tripartite सर्वे का नाम कंट्रोल ओवर कन्नौज. और ये तीनों क्या कहते हैं कि हम कंट्रोल करते हैं कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करें. Because Kannauj was commercially very important place and it lies in the Ganga. और ये कहाँ पे था? गंगा ट्रेड रूट. यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी होती थी. कमर्शियली ये बहुत फ्लरिश जगह थी. इसलिए सारे चाहते थे कि ये कन्नौज में. अब हम देखते हैं कन्नौज कहाँ पे दिखाया आपको? ये कन्नौज. This area is Kannauj and this Rajputta, Gujarata Pratihar and Pala. All they want to do is this Kannauj. Now our next topic is next example is that is attack of Germany and Goli. Attack of Germany and Goli. Attack of Germany and now ruler demonstrate their power, power Germany attack of Afghanistan. Ruled from 100 controlled part of Central Asia, Iran, and North Western part, Northwestern
western part of subcontinent. Subcontinent. Now, what we see? Attacks of Ghazni and Gauri. Muhammad Gauri is second example taken beside that effect के बाद गद्दी और गौरी के द्वारा इस प्रकार आक्रमण किया गया। तो रूलर जो थे डेमोन्स्ट्रेट their power resources between countries. इस समय रूलर थे अपने पावर को किस प्रकार दिखाते थे? दे पावर और रिसोर्सेज को किस प्रकार दिखाते थे? बड़ी बड़ी मंदिर टेम्पल बना के करते थे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए सुल्तान मोहम्मद गजनी। गजनी इज a place of उन्होंने कहा से कब तक रूल किया 997 to 1003 कॉमन किया। तो मोहम्मद 1997 to 1003 कॉमन किया। He ruled over parts of Central Asia, Iran and northwestern parts of the subcontinent. So, children, his aim was not to settle empire in India or to rule over India. Rather, he wanted to plunder wealth of India, and for plundering wealth, he targeted wealthy champions. तो क्या बताना कि चिल्ड्रन देखो उसका जो एम था वो एम्पायर सेटल करने का नहीं था इंडिया में, ना ही इंडिया के ऊपर रूल करने का था। वो अफगानिस्तान से था एंड ही वांटेड टू प्लंडर वेल्थ ऑफ और वो चाहता था कि वो इंडिया की जितनी धन दौलत है उसको लूट के ले जाए। Raided subcontinent, target wealthy temples, wealthy temples. Example: Somnath temple. Now, तो उससे इंडिया से वेल्थ को लूटना चाहा और उसके what was his target every year हर साल ये आक्रमण करते थे इंडिया पे और उनका टारगेट था वेल्थी कंट्री जो कंट्री से बहुत धन दौलत है वैसे कंट्री से लिए अटैक करते थे, है ना? एंड सच वन एग्जांपल इन सोमनाथ टेम्पल तो सबको पता है और that he attacked Somnath temple 17 times and plundered the wealth of Somnath. तो साबान ने आक्रमण किया और ये उसको लूटकर वहां से धन दौलत को लूटकर ले गए। ये capital city Ghazni. So he looted he looted the wealth from everywhere and he went to his place.
वह वेल्थ को लूटकर अपने जगह गजनी चले जाते थे, है ना, और वहां पर गजनी को डेवलप करते थे, सारे पैसा वहां पे लगा के उसको डेवलप करते थे, वहां की जरूरतों को पूरा करते थे। इंटरेस्टेड थे स्कॉलर एल बिरोनी बिरोनी activities, information, people he conquered. So he Muhammad Sultan wanted to write account for him, like activities, information, what he have done, and people he conquered, किससे उन्होंने युद्ध की, उनके बारे में कोई लिखे, ये वो चाहते थे कि उनकी इंफॉर्मेशन लिखे, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, कैसे युद्ध जीता, ये सारी चीज लिखे। दैट इज वाई ही हायर्ड ए स्कॉलर अल बिरोनी, इसलिए उन्होंने एक विद्वान स्कॉलर अल बिरोनी को नियुक्त किया, अपॉइंट किया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो उनके बारे में लिखे। Al-Biruni wrote book Kitab-ul-Hind in Arabic, और अल-बिरोनी ने उनके बारे में एक पुस्तक किताब-उल-हिंद में उनकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी। एंड दिस बुक बिकम ए इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ। एंड some other rulers who were engaged in the warfare for wealth, acquire for wealth was चामन्ना और चौहान। थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे, वो था चमांस और चौहानस के लिए। ruled in the region of Delhi, Ajmer to expand control east, west and east. Now, next example we will see of Chauhan and Chamanas. पहले चमन्ना से बाद में ये चौहान कहलाने लगे। That is from the Chauhan family, and they ruled over Delhi and Ajmer. ये कहाँ राज्य करते थे? Delhi and Ajmer. They tried to expand and control from west to east. वे कहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे? वेस्ट से ईस्ट तक पूरे।
है ना. But they could not do it because they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Khandavas of Western Uttar Pradesh. Opposed, opposed by, opposed by Chalukyas, Chalukyas of Gujarat, Gujarat and Khandavas Khandavas of Western Uttar Pradesh. So what we see, they could not expand their control to West and East. ये अपने कंट्रोल नहीं कर पाए वेस्ट एंड ईस्ट के किंगडम पे, क्योंकि उनका अपोजिट कौन किया था, चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड खंडावास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना. इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है चामन्ना रूलर पृथ्वीराज थ्री. पृथ्वीराज III was the best Chamanna ruler. Chamanna ruler. He was the best Chamanna ruler. Prithviraj Chauhan. He was the best Chamanna ruler. Muhammad Ghori attacked over Delhi in 1191, defeated by Prithviraj. Defeated by Prithviraj, है ना. पृथ्वीराज III. Attacked again in next year, that is 92. This time Prithviraj III was defeated. Now what happened? Prithviraj III was best Chamanna ruler. Muhammad Ghori attacked Delhi in 1191, है ना, and he was defeated by Prithviraj III. वो पृथ्वीराज से हार गए थे 1191. Now he attacked again next year, that is in 1192, and Prithviraj III was defeated. इस समय हम क्या देखते हैं, पृथ्वीराज III हार चुके थे. So in this way we have completed this topic. In next period we will now start new topic, that is closer look, the Cholas. Chola kingdom के बारे में next period में पढ़ेंगे, and metal plate which contain about the details of rulers, and it was written by Brahman in Sanskrit and regional language. Processes may not be true. They tell us how
rulers want to depict themselves. वो ये बताता है कि रूलर्स अपनी बड़ाई किस प्रकार अपनी प्रेसिडेंशियल लिखवाना चाहते हैं. That they were very valiant, victorious and warriors. And king often rewarded Brahmins by grants of land. And it was written on copper plate. And resources were given in the land, that is like resources that right to collect tax, permission for construction of wells, and all that. Now, warfare for wealth, in this what we see that ruling dynasties has a specific region and they try to control other areas also. And why they want to control other areas? To increase their power, to acquire more wealth, to capture the resources, etc. Now, in this we have seen three examples for warfare of wealth. The first was tripartite struggle for Kannauj, attack of Muhammad Ghazni, and Prithvi Raj versus Muhammad Ghori. So we see that Kannauj was very important and prosperous city in Ganga Valley, and rulers belonging to Gujarata, Pratihara, Rajputa and Pala dynasties, they fought for control over Kannauj. ये सारे जो स्ट्रगल के जो रूलर्स थे गुजरात, प्रत्यारा, राजपूत और पाला, इन्होंने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल के लिए युद्ध किया. एंड नाउ historians describe as tripartite struggle. Historian ने tripartite struggle कहा. The attacks of Ghazni and Ghori. So what we see in this topic, that to demonstrate their power and resource, the rulers make big building, large temples, and they were often rich, and attack how Sultan Muhammad attack of Sultan Muhammad Ghazni in Afghanistan. The ruler from 997 to 1030 common era. He controlled parts of and after plundering wealth, he used to create a splendid capital city at Ghazni. Ghazni में एक बहुत established city बनाते थे. And he instructed his scholar named Al-Biruni. Al-Biruni responsibility to write his activities, information, and people he conquered. And Al-Biruni wrote his account in Kitab-ul-Hind book in Arabic, and it was a important source for historians. Now we will see about Chamarnas and Chauhans. What we read, that he ruled region around Delhi and Delhi and Ajmer, and expanded his control wanted to control west and east also, but it was opposed by Chalukyas of Gujarat and Khandavas of western Uttar Pradesh. And best known Chamarna ruler was Prithvi Raj. Now Muhammad Ghori attacked over Delhi in 1911 and he was defeated by Prithvi Raj III. But next year in 1192, he attacked again, and in this time Prithvi Raj III was defeated. So I think, children, the topic is clear to you. For Hannah, now we will continue with the next period, the same chapter, and till then, goodbye and see you next video. Okay.